और अब आइए सीधे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री मिशेल चार्ल्स इस समय संयुक्त रूप से एशिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप यानी दूरबीन का उद्घाटन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ब्रसल्स बेल्जियम की यात्रा पर हो और इस समय ब्रसल्स में मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें हैं ब्रसल्स से और नैनीताल स्थित देवस्थल से। देवस्थल पर केंद्रीय विज्ञान एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री, विज्ञान तकनीक एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रसल्स में अपने बेल्जियम समकक्ष चार्ल्स मिशेल के साथ हैं। ये एशिया के सबसे बड़े दूरबीन का उद्घाटन प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से करेंगे और इस देवस्थल पर में बने हुए इस दूरबीन के निर्माण में बेल्जियम ने काफ़ी योगदान किया था और साथ ही साथ 7% की हिस्सेदारी बेल्जियम की थी। This project has been the starting point of a reinforced collaboration between Belgium and India, as the Belgian Federal Science Policy Office, BELSPO, financed 7% of the project in exchange of observing time for Belgian astronomers. The 150 tons, 13-meter high telescope was designed, built here in Belgium in the EMOS facilities. The transport to India was a challenge, as the main telescope elements could not be split in small parts, but it eventually arrived safely in Devastal, where it stands now with the ARIS team. So we can see here the team in Devastal in front of the telescope. Brijesh, can you hear me? Greetings to Excellencies from our Honorable Minister of Science and Technology, Dr. Harshvardhan, Government of India, and from all present here at Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences, Devasthal, India. The 3.6-meter telescope project was initiated with an objective to do fundamental research on origin of galaxies, life cycle of stars, and to solve many mysteries of the cosmos. Accordingly, the Devasthal site was selected and the specifications of telescope and the building were decided. In the year 2015, we could test the performance of entire telescope facility using back-end instruments developed by ARIS team in India. We could record images of binary stars with an angular resolution of 0.4 arcsecond, which is an standard for any ground-based optical facility. Thank you. So the Devastal optical telescope that you can see here is now ready to work as a world-class instrument. This success is the result of the dedication and the collaboration between the ARIS and the EMOS teams. We will now officially perform the technical activation of the telescope. As you can see on the live pictures here, the dome is closed and the telescope is in a parking position. But in front of you, you have a box with 2 green buttons, and you can press in a few seconds those 2 green buttons together. This will trigger the pointing of the telescope towards the sky and the opening of the dome. Then the telescope will be ready for science operations as soon as the sky is completely dark on the site. So please, gentlemen, if you can press the green button whenever you're ready. So now you can see the telescope moving. So while the telescope is pointing to the sky, I will take this opportunity to make an announcement that the PRL, the Physical Research Laboratory of India, has just placed a new order with the company EMOS for a new 2.5-meter telescope. And this will be installed in a few years on Mount Abu in the province of Rajasthan. So now you see that the dome is opening and you can see the sky through the slit of the dome.
That means that the telescope is now ready to take pictures of the sky, such as this galaxy that you can see here that has been taken by the telescope a few days ago. I want to thank all the people here in Belgium and in India who have worked hard to make this project a reality and to prepare today's event. And I thank you, Excellency, and Monsieur le Premier Ministre, for the successful activation of the telescope. I think this deserves a new round of applause. Well, I would want, first of all, to thank the Prime Minister of India for his presence in our country, in Belgium. I have had, of course, the opportunity to express this morning my condolence to the Prime Minister of India because there is one Indian victim after these terrible attacks in Brussels. Je veux commencer par remercier le Premier ministre de l'Inde pour sa présence à Bruxelles. J'ai eu l'occasion d'exprimer au nom du gouvernement belge nos condoléances dans le cadre de cette victime indienne après les attentats qui ont été commis à Bruxelles. J'ai aussi exprimé nos vœux de bon rétablissement pour deux personnes blessées qui appartiennent à la compagnie Jet Airways. This official meeting with the Prime Minister of India was a very important moment in our bilateral relationships. We have a very good and very strong relationships between Belgium and India, and we try to upgrade our relationships. We try to support the economic development in our both countries. Nous tentons de voir de quelle manière on peut renforcer la coopération bilatérale entre l'Inde et la Belgique, et nous pensons que l'enjeu du développement économique en Inde et en Belgique est évidemment un enjeu extrêmement important. Nous avons eu l'occasion ce midi de partager un déjeuner après notre entretien bilatéral avec plusieurs dizaines de femmes et hommes d'affaires belges particulièrement présents dans des partenariats économiques avec l'Inde. Nous constatons que si ce partenariat économique fonctionne bien aujourd'hui, nous souhaitons pouvoir le faire fonctionner encore mieux à l'avenir. Nous souhaitons voir de quelle manière il est possible de développer encore plus d'opportunités, et nous avons la conviction qu'un certain nombre d'expériences et d'expertises que nous avons au départ d'opérateurs économiques belges peuvent être utiles pour cet important pays, l'Inde, qui connaît un développement économique important, impressionnant, au travers de réformes qui sont menées. J'ai mis en évidence les secteurs d'activité, quelques-uns en tout cas à titre d'exemple, qui peuvent être mis en lumière. Je pense bien sûr à la question des infrastructures portuaires, mais également les infrastructures fluviales. Je pense à la question de l'énergie et l'enjeu de la COP21 et la dimension des énergies renouvelables, qui est un point extrêmement important que nous partageons. Je pense aussi à la science du vivant et à la science du médicament, les biotechnologies, mais également le secteur pharmaceutique. Je pense aussi à la chimie, et je pense aussi bien entendu aux services que l'on peut mettre en évidence dans le cadre du développement économique. Il va de soi que le secteur du diamant est un secteur qui nous relie, puisque nous avons là, de toute évidence, deux secteurs d'activité qui sont des secteurs importants pour nos pays respectifs. Il y a d'autres opportunités, il y a beaucoup de PME belges qui souhaitent pouvoir se développer également avec un ancrage international, et nous pensons que l'Inde est effectivement un pays important dans ce cadre. J'ai aussi eu l'occasion de mettre en évidence l'importance qu'il y avait pour nous de pouvoir continuer à exporter la bière belge en Inde, et nous espérons que dans le cadre d'accords avec l'Union européenne en matière de libre-échange, il sera possible là aussi de trouver un certain nombre de solutions dans le cas de préoccupations que j'ai pu exprimer au nom d'entreprises belges. Nous avons bien sûr eu aussi l'occasion d'évoquer
d'autres questions qui concernent la situation de la lutte contre le terrorisme, de la lutte pour plus de sécurité. Nous avons présenté chacun la volonté de travailler sur le plan bilatéral et multilatéral pour favoriser les échanges d'informations. Et nous avons constaté qu'il était important que les Nations Unies puissent prendre aussi des décisions qui orientent cette lutte contre le terrorisme de manière plus forte encore en combattant tous ceux qui directement ou indirectement soutiennent les différentes formes de terrorisme, que ce soit au travers du trafic d'armes, au travers du financement du terrorisme ou au travers de facilités qui sont données à ceux qui ont de mauvaises intentions, qui veulent semer la terreur, la tragédie, ou que ce soit dans le monde. Voilà quelques éléments que je voulais mettre en évidence. Je ne vais pas être beaucoup plus long dans cette déclaration. Je remercie encore une fois le Premier ministre et sa déclaration. I want to thank the Prime Minister and his delegation for the presence today in Belgium. We have a very strong relationships and we want to work together in order to improve, to upgrade our relationships in the future. And we will have a very important moment in 1 year, in 2017, with a state visit in your country. It's certain it will be a very important moment in our relationships. I thank you. Thank you. Your Excellency, Prime Minister Charles Michel, media, thank you for your remarks. मैं अपने प्रेस स्टेटमेंट के पहले आज जो देवस्थल उत्तराखंड हिमालय की गोद में एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप का लोकार्पण हुआ। मैं भारत और बेल्जियम के दोनों टीम्स को इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पार करने के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। एशिया के सबसे बड़े फुली स्टेयरेबल ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो कि हिमालय की ऊंचाइयों में एक रिमोट एरिया में स्थापित करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन जिस दृढ़ विश्वास और डिटर्मिनेशन के साथ दोनों देश के वैज्ञानिकों ने, टेक्नीशियनों ने काम किया, ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। 2500 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड में नैनीताल के पास स्थित देवस्थल इस प्रकार के साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के लिए एक यूनिक स्थान है, जिसे वैज्ञानिकों ने बहुत ही बड़ी खोजबीन के बाद सिलेक्ट किया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस टेलीस्कोप के द्वारा भारत और बेल्जियम के वैज्ञानिकों को तो अपने काम में सफलता और सहायता मिलेगी ही, साथ ही साथ यह पूरी मानवता के ज्ञानवर्धन में भी उपयोगी साबित होगा। इस टेलीस्कोप प्रोजेक्ट में अनेक सारी विशेषताएं हैं। पहली तो हमारा यह सहयोग सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सीमाओं में नहीं बंधा है। एरिस का एक स्वायत्त संस्था है, एमोस एक निजी कंपनी है, और इस प्रोजेक्ट का फंडिंग भारत और बेल्जियम की सरकारों के द्वारा हुआ है। यह सहयोग एक प्रकार से हमारा विन विन सिचुएशन है। और दूसरा, हम ब्रसेल्स में लगभग
6,500 किलोमीटर दूर होकर भी इसे रिमोटली एक्टिवेट कर पाए हैं। यह दर्शाता है कि यदि साझा प्रयास हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। फ्रेंड, इन दिस केस इवन द स्काई इज नॉट लिमिट। और मेरे लिए खुशी की बात है कि मैंने पिछले सप्ताह बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ इसी प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए 2 बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। आज बेल्जियम के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के आकाश दर्शन का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो रहा है। मैं बेल्जियम के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। आज मैं पूरा दिन भर यहां था, उसके संदर्भ में मैं कुछ बात जरूर बताना चाहूंगा। लास्ट वीक हैज बीन ए सैड वीक फॉर बेल्जियम। लेट मी से, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, that we share the depth of sorrow and grief that the people of Belgium have experienced in the last 8 days. My deepest condolences to the families of those who lost their loved ones to the terror strikes in Brussels last week. Having experienced terrorist violence ourselves on countless occasions, we share your pain. Mr. Prime Minister, in this time of crisis, the whole of India stands in full support and solidarity with Belgian people. I deeply appreciate our welcome and the time that you have devoted to me despite pressing demands on you. As a part of our efforts to respond to this common challenge, we could resume discussions on a mutual legal assistance treaty. Negotiations on extradition treaty and a treaty on exchange of sentenced prisoners could be concluded quickly. Friends, our 2 countries share a long history of friendship. 100 years ago, more than 130,000 soldiers from India fought in the First World War alongside your countrymen on Belgian soil. More than 9,000 Indian soldiers made the supreme sacrifice. Next year will mark the 70th anniversary of India-Belgium diplomatic ties. To celebrate this important milestone in our friendship, we look forward to welcoming His Majesty King Philip of Belgium in India next year. We would also be commemorating it with a joint program of activities in each other's countries. My conversation with Prime Minister Michel today covered the whole spectrum of our ties. A system of bilateral foreign policy consultation would recommend concrete ways to upgrade our partnership. Friends, India is one of the brightest economic opportunities in the world today. Our macroeconomic fundamentals are robust, and at 7% plus, we are one of the fastest growing economies of the world.
I believe that a combination of Belgian capacities and India's economic growth can produce promising opportunities for businesses on both sides. Prime Minister and I have just held a productive interaction with Belgian CEOs and business persons earlier today. I invite the Belgian government and companies to proactively associate with India's ambitious development projects, including Digital India, Startup India, and Skill India. Belgian businesses can make their global supply chains more cost-effective by manufacturing in India. India's goal to modernize infrastructure, especially railways and ports, and buildings of 100+ smart cities, also presents a unique investment opportunity for the Belgian companies. These partnerships can help us reach new heights in our trade and commercial partnership. I have invited Prime Minister Michel to visit India with Belgian businesses to see firsthand the reality of India's economic and political promise. Clearly, it is not just diamonds that can bring shine to our partnership. Climate change is one of the greatest challenges before mankind. Prime Minister and I have agreed to enhance our cooperation in renewable energy. We would also build partnership in areas such as harnessing waste for energy, small wind turbines, and zero-emission buildings. Advancement in science and technology and high technology areas is of particularly importance for India's development priorities. We welcome Belgium's collaboration in these areas. Prime Minister Michel and I have just activated remotely India's largest optical telescope. This product of Indo-Belgian collaboration is an inspiring example of what our partnership can achieve. The work is also afoot on other agreements in the areas of information and communication technology, audiovisual production, tourism, biotechnology, and shipping and ports. Friends, in a couple of hours from now, I will meet the European Union leadership for the 13th India-EU Summit. For India, EU is one of our strongest strategic partners. Trade, investment, and technology partnership between India and the EU would be one of the focus areas of our discussions. I feel that a progressive path and creative mindset to India-EU trade and investment agreement can enable all the European countries, including Belgium, to benefit from India's strong economic growth. I once again express my sincere gratitude to Prime Minister Charles Michel for his time, welcome, and hospitality. I look forward to welcoming him in India. Thank you very much.
ये था सीधा प्रसारण ब्रसेल्स से, जो कि भारत ब्रसेल्स बेल्जियम संबंधों के गौरवशाली क्षण का हम साक्षी बन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्ष बेल्जियम समकक्ष चार्ल्स मिशेल ने संयुक्त रूप से रिमोट टेक्निकल एक्टिवेशन किया देवस्थल स्थित एशिया के सबसे बड़े दूरबीन का, जिसमें बेल्जियम का 7% हिस्सेदारी आर्थिक रूप से की गई और 93% भारतीय हिस्सेदारी है। और साथ ही साथ रूस एवं जर्मनी तथा बेल्जियम के सहयोग से बना ये एशिया का सबसे बड़ा दूरबीन होगा, जो कि नैनीताल के देवस्थल में स्थित है। 150 करोड़ रुपए की लागत से ये बना हुआ है, जो कि 360 डिग्री घूमकर और 90 डिग्री अपनी स्थिति से दोनों तरफ जाकर आकाशगंगाओं के और आकाश की किसी भी स्थिति में स्थित तारामंडलों की जानकारी हासिल कर सकता है। इस संयुक्त उद्घाटन के मौके पर नैनीताल में उपस्थित थे केंद्रीय विज्ञान एवं पृथ्वी मामलों के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, और साथ ही साथ ब्रसेल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्ष चार्ल्स मिशेल थे। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने एक भारतीय की मौत पर दुख व्यक्त किया और साथ ही साथ पिछले हमले में, और उन्होंने कहा कि भारत के साथ संबंधों को नई ऊंचाइयों को ले जाने के लिए उन्होंने प्रतिबद्धता जताई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूरोपियन यूनियन भारतीय संबंधों के लिए अगर रचनात्मक कार्यशैली और रचनात्मक मनोदशा से हम करते हैं तो दोनों देश और दोनों संघ बेहद अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत का लक्ष्य एक विकसित भारत का निर्माण करना है उनका लक्ष्य, और इसमें यूरोपीय यूनियन और खासकर बेल्जियम जैसे देश एक नई भूमिका निभा सकते हैं। दोनों देशों के 70वें कूटनीतिक संबंधों के मौके पर उन्होंने बेल्जियम के प्रधानमंत्री को भारत आमंत्रित किया और भारत में औद्योगिक संभावनाओं और संबंधों को नए आयाम देने के लिए भी आमंत्रित किया।